हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको एक सिंपल ट्रेडिशनल फेस्टिव लुक दिखाऊंगी एंड एवरीथिंग यूज्ड इन दिस वीडियो इज़ वेरी अफोर्डेबल। आई हैव ओनली यूज्ड प्रोडक्ट्स अंडर ₹500। फर्स्ट स्टेप में मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ द कलरबार फ्लॉलेस फिनिश प्राइमर। इससे स्किन को एक स्मूथ लुक मिलता है और आपका फाउंडेशन काफ़ी लॉन्ग भी लास्ट करेगा इफ़ यू यूज़ दिस बिफोर अप्लाइंग फाउंडेशन। फॉर फाउंडेशन आई एम यूजिंग नायका स्किनशील्ड। अभी ये डिस्काउंट पे है। ओरिजिनली इसका प्राइस इज़ ओवर 500, लेकिन यू कैन गेट इट एट अ डिस्काउंट इन द इंडिपेंडेंस डे सेल राइट नाउ। दिस इज़ हाई कवरेज, इट्स लॉन्ग lasting. The shade range is also good, or monsoon या summer season में especially this works really well for me. Now for eyebrows, I'm using this pencil from Wet n Wild. Eyebrows fill करते time you have to be careful about one thing कि highest point is where you want to fill it more, और beginning में you don't want to fill it too much, otherwise it looks unnatural. Now coming to eye makeup, I'm using this soft purple color. This is by Nykaa, और पहले मैं एक base create करूँगी, तो इसको I'm applying it all over my lid. And after covering the entire lid area, I'm going to take a brush और केवल edges में उसको थोड़ा सा blend और smudge करूँगी। इससे एक nice smoky base is created, और next step में हम eyeshadow apply कर सकते हैं। For eyeshadow, I'm using this palette by Wet n Wild. I'm using that transition color, soft light brown color है जिसको मैं crease में use कर रही हूँ। जब भी आप कोई भी colored eyeshadow या dark eyeshadow lid पे apply करते हैं तो it's very important to use एक lighter matte brown color in the crease as a transition shade. Now I'm going to use this color which is like a dark brown with a little bit of shimmer, और इसको I'm applying it all over the lid. So even though we are covering up that purple that I had applied earlier, the purple will still show through a little bit and give that brown a little more dimension. For the lower lash line, I'm going to use that same eyeliner pencil, the purple one. I'm applying it on the waterline, and then I'm going to take that brown eyeshadow which I have used on the lid, and I'm going to slightly smudge and smoke out that purple liner. Next step है concealer. I'm using the Maybelline Fit Me Concealer in the shade 30. As you can see, इसको मैं केवल inner corner और outer edge पे apply कर रही हूँ. Inner corner क्योंकि this is where I have the maximum darkness, and outer corner because this will just clean up the eyeshadow and give it a neat finish. वापस ब्रश के साथ आई एम गोइंग टू सॉफ्टली स्मोक आउट, क्योंकि कभी कभी कंसीलर से बहुत हार्श लाइन जैसा दिखने लगता है. एंड देन टू फिनिश द आईज आई एम गोइंग टू यूज़ मस्कारा. आई एम यूजिंग द Maybelline Total Temptation. आई एम गोइंग टू यूज़ 2 coats of this on the top lashes and on the bottom lashes as well. Especially for a smoky look, bottom lashes पे मस्कारा अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है because it gives you a lot of intensity. Do you see the difference that mascara can make? Now for lipstick, I'm using one of my old favorites. This is Touch of Spice by Maybelline. ये बहुत ही नेचुरल लुकिंग पिंक है जो ज़्यादातर स्किन टोन्स को अच्छे से सूट करेगा. इट्स अ वेरी गुड कलर फॉर एवरी डे वेयर एंड फॉर ऑफिस, एंड आई एम ऑल्सो यूजिंग इट एज अ चीक कलर. सो यू डोंट ऑलवेज हैव टू हैव अ सेपरेट ब्लश. आप अपनी लिपस्टिक को यूज़ कर सकते हैं एज अ चीक कलर. टू हाईलाइट आई एम यूजिंग वन ऑफ माई फेवरेट अफोर्डेबल हाईलाइटर्स. दिस इज़ द वन बाय नायका. ब्रश से अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा आई एम टैपिंग विद माई blender to give it a nice seamless blended finish. और inner corner highlight करना बहुत ज़रूरी है, especially अगर आप smoky eye कर रहे हैं तो it can make your eyes look a little closed off and dark. So adding that little bit of inner corner highlight will just brighten up your eyes really well. And that is the final finished look. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया. Please don't forget to subscribe. My next video will come on Saturday. I'm uploading every Wednesday and Saturday now. Thanks for watching. See you soon. Bye.